Hello, everybody. I'm in Sydney in a room where I entered 30 years back. And exactly this great gentleman stood up and he received me there. And that was my first day, which I always thought was my first day of learning, but actually now I realize it's my first day of unlearning. And this brief period I spent here in St. George Hospital under the wings of Professor DavidLMorris. By the way, those of you who are in surgery or in research, for them, name of Professor DavidLMorris is not a strange name. But let me tell for those who don't know him that he is one of the top in the world. When he was doing liver surgery, he has got more than 1,000 research papers, so many patents. And the gentleman who is actually filming us is Javed Iqbal, and he was the one who received me. And then he is also a research fellow, colleague of Professor Morris and student of Professor Morris. And they have done remarkable things which are actually have got a global scope. So I'm here just to pay my tribute and just to say thank you for all you have done with me. And I always remembered you. All my colleagues in Pakistan know you, that you were the person who mentored me in my initial years. And if I would have not come to Australia, I would have been a different person. Thank you very much. And I would like you to please let my friends, surgical colleagues, let you know all the great work you have done. I want you to just please let me know. If you allow me, I'll put this mic here. That's very kind and actually a lot of rubbish. Oh. But one thing I remember very well about you is that shortly after you went home from here, you wrote to me and thanked me for the training you'd had in liver surgery because you'd just been able to save the life of a child from a car accident who had a liver injury. And I knew that you were the right kind of person then, and that you would be a successful and useful surgeon in the world. So it's my pleasure to see you again. And things have changed in that I did a lot of liver surgery, and I have really moved away from that. I still do some liver surgery, but almost all of our time now is spent on peritoneal cancers. And we treat patients with pseudomyxoma, obviously, and we have very good long-term survival data of them in excess of 90% at 5 years and 80 odd percent at 10 years. In appendix adenocarcinoma, we have more than a 50% 5-year survival, not pseudomyxoma, adenocarcinoma of the appendix. In mesothelioma, again, it's quite the same. Peritoneal mesothelioma, better than 50% 5-year survival. I've done almost 2,000 peritonectomy hypex now, and our mortality now is around 1%. When we started the first year or so, we had a mortality of 8%, and it is still a very major, difficult procedure. But over the years, we have, our team has got better at looking after these patients and selecting the ones to do. I'm going to the Middle East in 2 days to speak about redo colorectal peritonectomy. So people that have had a peritonectomy and then recurred with colon cancer, and even then, in the redo procedures, we have a 5-year survival of greater than 50% of the patients. So it's been really quite amazing what can be achieved. So I've enjoyed the last 35 years that I've been here. Things have changed. And I also would like to talk for a few minutes anyway about the research that Javed and I have done over the years, in that we've developed drugs for cancer. And our current drug, which we've actually got patents on and we've formed a company around, and it's now in phase 2 trials in the US and the EU, has been really focused on mucin in cancer,
but then also mucin in the respiratory tree. And we certainly have a very potent agent that can dissolve mucin. And that's really been very interesting, and I hope will help a whole lot of people. Anyway, thank you very much to come to see me. I value every minute that you are here. Thank you very much, and I wish that next time when I'll come, and hopefully I'll be coming here repeatedly, I'll ask you to please allow me to be with you in the operational theater and to see that peritoneal things. Yeah, that will be lovely. Good. Yeah, right. Thank you. May I? Yeah. And I would also like to. Can we swap? Can you give me the camera? Yeah, I would like to just introduce Javed to you. Yeah, Javed is a Pakistani fellow, and he is colleague of Professor Morris, and I know him since last 30 years, and he has been part of this project. And he's so proud of us that a Pakistani scientist has contributed in that great research. So you want to say something, Javed? Fortunate that working with Prof. Morris for almost 35 years. And we have done so many other projects, and with by luck, I think we have found this drug, which is making enormous global impact at the moment. And in the respiratory disorders, and especially in cancers, is going to be a wonderful drug. So Javed, we are proud of you. Thank you very much. And Prof, thank you very much for having us, having two Javeds with you and making best out of them. Thank you very much. अभी मैंने आप प्रोफेसर मॉरिस के साथ बात की थी, तो मैं ये चाहता था कि मैं कुछ उर्दू में भी रिकॉर्ड करूं ताकि हमारे पाकिस्तानियों को पता लगे। तो ये डॉक्टर जावेद अख्तर हैं, और ये आज से 30 साल पहले मेरे दोस्त बने थे। जब मैं पहले दिन यहाँ आया था, तो ये पहले पाकिस्तानी थे यहाँ, तो मेरे प्रोफेसर जिनकी आपने वीडियो भी देखी है, प्रोफेसर मॉरिस ने मुझे इनके हवाले कर दिया, और अब फिर हम यहाँ ऑस्ट्रेलियन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में गए, और ये मुझे अपनी गाड़ी पे लेके गए, और वापसी में उन्होंने मुझे लंच करवाया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कहाँ यहाँ से हलाल फूड कहाँ से मिलती। तो उस दिन से हमारी दोस्ती है। तो ये पाकिस्तान से हैं, कराची से, और ये साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने प्रोफेसर मॉरिस के साथ मिलकर बहुत सी इजादात की हैं, और उनमें से एक बहुत ही रिमार्केबल किस्म की इजाद की है, एक दवा जो कि कुछ बीमारियों के पूरे फेट को चेंज कर देंगी, और वो अभी ट्रायल के ऊपर हैं, और इंशाल्लाह मेरी प्रोफेसर मॉरिस से बात हुई है, तो पाकिस्तान में भी उसका ट्रायल की उन्होंने कुछ अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। तो वो थोड़ा जावेद से मैं पूछूंगा कि प्लीज़ आप बताइए, और ये हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात है कि एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने एक ऐसी चीज़ ईजाद की है जो कि रहती दुनिया तक मरीजों के लिए होगी फ़ायदेमंद। और जावेद ने मुझे कहा था कि मैं ये सोच रहा था कि मैंने यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आया, काम भी किए, सब कुछ किया, लेकिन मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि जब हम इस दुनिया, अल्लाह इसको लंबी ज़िंदगी दे, कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो तब भी हमारा काम जारी रहे, और ये वो एक ईजाद है। जावेद बताइए उसके बारे में। ये बेसिकली है कि ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी है जो कि मेरी लैब में हुई है। ये बेसिकली डिज़ोल्व म्यूसिन अगर पाकिस्तान में अगर म्यूसिन को कहें तो बलगम तो जैसे आपको पता है कि तमाम रेस्पिरेटरी डिजीज़ में होती है। ये ऑल्सो जो म्यूसिन है ये बहुत सारे कैंसर्स में होती है। ये जो डिजीज़ है जिसका नाम है सूडोमिक्सोमा पेरिटोमी, इसे रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर। इस कैंसर में क्या होता है कि पेरिटोनियल जो कैविटी है ये सारा म्यूसिन से भर जाता है, जो कि जेली लाइक मटेरियल होता है, और ये कम से कम एक पेशेंट से 4 से 5 किलो तक ये मटेरियल निकलता है। तो दुनिया में सारे सर्जन इससे बड़े परेशान थे। इनफैक्ट दिस ईजाद के लिए लोग सोच रहे थे अबाउट 150 ईयर्स अगो दिस डिजीज़ वाज डिस्कवर, और जब से ये ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी दवा ईजाद हो जिससे ये जेली लाइक मटेरियल पानी में तब्दील हो जाए। तो मेरी जो ईजाद है वो इस जेली को एक्चुअली पानी में तब्दील कर देती है। मैं जावेद साहब इसमें एक तस्वीर भी लगाएंगे जिससे आपको इसका बेहतर पता चलेगा। तो ये जो दवा है ये नॉन हैज़र्डस दवा है, इसकी खासियत ये है, और ये पाइन एप्पल से एक्सट्रैक्ट हुई है, और इस पाइन एप्पल के एक्सट्रैक्ट को हमने एक और दवा से मिल के बनाया है, और नाउ इट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड ओवर एंड इज़ बीन ट्राइड इन वर्ल्ड ओवर, एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द ही क्लिनिकल ट्रायल होने वाले हैं अमेरिका में, यूरोप में, ब्राज़ील में, और ये इनफैक्ट कोविड पेशेंट के लिए भी बहुत मुफीद साबित होगी। और जो हमारे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मॉरिस,
تو ابھی میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے اس بات کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کیونکہ پاکستان میں بہت پیشنٹ ہوتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اگر یہ ممکن ہو تو اس کو پاکستان میں بھی ٹرائل کیا جائے. اور اس دوا کا نام برومیک ہے، BROMAC. آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں. اور دیر از اے بایوٹیک کمپنی ہیز بین فارم آن اراؤنڈ دس ایجاد پروڈکٹ وچ از اے میک فارم، کمپنی کا نام ہے. تو آپ اگر میک فارم MUCPHARM تو آپ کو ساری اطلاع اس میں مل جائے گی. جی بالکل. تو مجھے بہت خوشی ہوئی، میں ابھی اپنے اس پرانے ہاسپٹل میں آیا ہوں جہاں میں کام کرتا رہا ہوں، یہاں سے پڑھ کے گیا تھا. تو یہاں پھر دوستوں سے ملاقات ہوئی اور یہ جب پتہ لگا کہ اتنی بڑی ایجاد ہے تو میں نے سوچا یہ میں بتاؤں. یہ ہمارے سب پاکستانیوں کے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ ہمارا ایک بھائی یہاں بیٹھ کر اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے. تو جاوید شکریہ آپ نے تھینک یو. شیئر کیا، تھینک یو. اور اب اپنی یونیورسٹی کا بھی بتائیے نا، ان کو فخر ہوگا تو سنیں گے تو. کون سی؟ پاکستان والی. ہاں، میں ایکچولی گریجویٹ ہوں کراچی یونیورسٹی سے، مائکرو بایولوجی. So I'm very proud being Pakistani and very proud that I have done something for Pakistan. تھینک یو.